want instruction to be followed. Don't compel me to punish you. I want pin drop silence, must you need to maintain that. Listen. Why this projector is not working? प्रोजेक्टर सही है ना 2A तो काम नहीं कर रहे हैं हाँ कल तक तो काम कर रहा था ये पर क्या हो गया उसके बाद यूज हुआ ये हुआ ही नहीं नहीं कुछ इशू आप लोग क्लास में कनेक्ट कर सकते वेट कर लीजिए थोड़ी देर एक और फीचर तो रोल नंबर मैच नहीं इधर आइए हाँ बिल्कुल साइलेंस में
A very charm morning to Neha ma'am and my dear friends. I am Shanaya Singh from BB Batch 2, and I am in front of you all for presenting PPT regarding the power of habit. And this PPT, in this PPT, there are 3 members also, and they are Nancy, Ragini, Rashmi, and me, Shanaya. And Nancy, whose roll number is 30, Ragini 34, and Rashmi 40. If we talk about this novel, let me move the slide. If we talk about this book, this book is all about habit. This book doesn't consist any fictional stories and all. This book also has the real life stories of individuals, and this book is written by Charles Twin. And if we're talking about this book, in this book, the author also gives statement about habits, and they only don't give the statements, but they also prove these statements by doing experiments, and these experiments have had done on the animals and individuals as well. And rat and monkeys are the animals on which the experiments have done. If we move further, the first character whose name is Lisa Allen. It is the favorite character of the scientist. According to her file, Lisa was 34 years old right now, but she started smoking and drinking, taking alcohol when she was at 16. She also had struggled with obesity because of overeating or binge eating, but she also have a debt of $10,000 because she overspent money on smoking, drinking, and all. And one day, when she was at a point when she was in mid 20s, a bank manager came to him and told her to recover the loans of $10,000 when at that time she has no money. And if we're talking about her job background is also not very good. Her job period is less than 1 year, so she didn't had a good job also. Because of her these type of behavior, her husband left her, and her husband engaged with another girl. It was a very difficult time for Lisa to overcome from all of this. She never expect that her husband will leave her because of these reasons. And at the time when her husband leave her, she had no money in her bank and not in her hand also. And at that time she was very it was very difficult for her, and she couldn't concentrate in any activities, like not concentrating in her smoking, drinking, and eating, etc. So I'm done with my part, and further part will explained by Nancy. And so Nancy, it's over to you. Can I start? As we all knew the story of Lisa. Now I'll be explaining the changing phase in her life. As she went through the cruel times of her life, one thing was clear in her mind. She became very resolute that she wanted to change. She had that persistent determination in her mind. She saw a lot of things which were not right in her life. So she decided that she will not just let her hopes even sent into the dark mist. So what she did is that she applied few things in her life. She made sure that she was impuissant enough, she was powerful enough that nothing could thwart the way her perseverance of the things that she wanted to do could be thwarted. So these are the things, these are the implementation that she implied in her life that in turn changed her as an individual. She had the conviction of changing, which came with sacrifices, of course.
She replaced jogging with smoking with jogging. She used to smoke a lot, as we learned from Shania. So she changed it with jogging. And then she also scheduled her work days, which was very unbalanced. She also lost appetite of eating during her bad days. So she also changed her eating habits. She started saving money, which as we have learned that she was in debt. So she paid her debts off, and she started saving money. She started planning for her future, and also eventually she was planning to purchase a house. What she did is that she repined from the crowds and she focused on herself, and that eventually emancipated her from her own demons and her misery. Thank you. Now we will be learning what benefits the implementation of changes resulted her in. I would like to call Ragini over. Ma'am, may I start? First of all, I would like to say thank you, Nancy. A very warm good morning to respected ma'am and my dear friends. I am Ragini, and here I am presenting the next slide, that is result part. It explains about how the change impact one's life or situation. Habit in this novel, it is not a fictional novel. This novel is all about real life story, and also researchers done experiment on human and animals. Animals include rat and monkey. The first character in the story is Lisa Allen. She, according to her file, she is now 34 years old. When she was 16, she started drinking and smoking, and also suffered from obesity. And she has a debt around $10,000. When she convinced herself to change her life, then she started planning for her future welfare and growth. Then she decided her work days, plan for buying a house. Then the result became she lose 16 pound weight, and she became lean and vibrant, and looked a decade younger than her age. Now she has no outstanding debt, and she also quit smoking and drinking. She has a work experience nowadays over 3 years in a graphic designing firm, and she herself is stable in her life and got engaged also. This example shows how one changes in her life become more comfortable, and she become more successful in her life. That's all. Now I would like to call Rashmi for the further explanation. With this slide, we came to the conclusion of the presentation, but yet it's not the end of the story. In fact, it is a start of the story. If we implement this habit in our life will change instantly. And at first, I would like to describe about what is habit. As you all can see, the difference between what you are and who you want to be is what you do is called habit. Habit, according to Charles Drake, who is also the author of this book, The Power of Habit, described that change might not be fast and it isn't always easy, but with the time and effort, almost any habit can be reshaped. There are basically three components of habit, which are the first, the reason behind the reason, and the second, the changes which takes place after the reason takes place, and the last is the resultant of that. And the the book Power of Habit describes the whole process of habit and whole process of habit, how changes came how changes came in any person's life. And
Yes. And Charles Todd says that change your habit and it will change your life. And that's all. That's all what I wanted to convey to you all. Thank you. What do you want to convey? Okay, no problem, but very well understood, very well presented also. But where the rest of the group? I haven't got the group name. Who will be presenting chapter 1? This is introduction part, okay? Now I will be explaining you, or I will be just giving you one hint for chapter 1 so that you will be able to present it in good manner. फुसफुसाने की भी आवाज नहीं आनी चाहिए. कौन है भाई ये? मैसेज क्लियर नहीं हो पा रहा है क्या? देखिए चैप्टर 1 में हम लोग यूजीन कैरेक्टर हैं, ठीक है? यूजीन एल्डरली पर्सन है, ऑलमोस्ट 65 इयर्स या एज एग्जैक्ट याद नहीं है, बट एल्डरली पर्सन है, ठीक है? ऑलमोस्ट 75 इयर्स हो चुका है, बट इनको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है. एक वायरस अटैक किया हुआ जिसकी वजह से उनको भूलने की बीमारी लगी है, ठीक है? जिसकी वजह से वो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, डिहाइड्रेशन, पेंटिंग, ये सारा प्रॉब्लम उनको हो गया था, जिसकी वजह से हॉस्पिटल ले जाया, ठीक है? इस चैप्टर में बेसिकली ये प्रूव किया गया है जो भी चीज हम रेगुलरली करते हैं वो ऑलमोस्ट हैबिट बन जाता है, ठीक है? वो पहले रिकवर भी किए, सारा कुछ ठीक रहा और अपना डेली काम करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा. यूजीन को डेली का काम करने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा. रीजन यहाँ पे साइंटिस्ट है लैरी स्क्वायर, ठीक है? वो इनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं. लैरी स्क्वायर यूजीन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं. चैप्टर 1 नहीं आया ना? ये है यूजीन पॉली, ऑलराइट? जिनको मेडिकल हिस्ट्री में किन्हीं को भी अगर मेमोरी लॉस होता है तो ईपी के नाम से ही जाना जाता है. ये मेडिकल हिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, ठीक है? तो ये चीज देखा गया कि इनको मेमोरी लॉस होने के बाद भी डेली का काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता था. किचन में जाकर के वो आराम से उठते थे, खाना लेते थे, खुद से बनाते भी थे और खाते थे, ठीक है? डॉक्टर ने सजेस्ट किया था वॉक करने के लिए, वॉक करने में भी इनको कोई मतलब डॉक्टर के अकॉर्डिंग कि अगर आप इनको छोड़ देंगे तो ये घर वापस नहीं आ पाएंगे, इनकी वाइफ को सजेशन दिया जा रहा था. बट अचानक से एक दिन क्या हुआ, वो अपने आप चले गए बिना बताए. तैयार हो ही रहे थे, बट इधर वाइफ तैयार हो रही थी, इधर वो निकल गए दरवाजे से. अब बेवर्ली इनकी वाइफ का नाम, ठीक है? बेवर्ली परेशान कि भाई अब चले गए हैं तो वापस कैसे आएंगे. हर जगह ढूंढ रही है, पड़ोस में पूछ रही है कहाँ है, किधर गए, पता नहीं. हर जगह रोना धोना चालू. अब उसको लगा कि अब तो मिलने वाले रहे नहीं, ना वो किसी को बता पाएंगे कि मेरा घर कहाँ पे है. तो वो सोची घर आकर के अब मैं पुलिस को कॉल कर दूं, ठीक है? जैसे वो घर आती है तो देखा जाता है कि यूजीन चेयर पे बैठा हुआ है, आराम से हिस्ट्री चैनल लगा करके वो टीवी देख रहा है, ठीक है? उससे जब पूछा गया कि कहाँ गए, कब वापस आए, कुछ उसको याद नहीं. इवन उसको ये पता भी नहीं है कि हाँ हम कभी घर से बाहर भी निकले, ठीक है? तो घर से आराम से बाहर निकल करके टहल वहल के आकर के बैठा हुआ. बेवर्ली को पता, यूजीन को पता नहीं कि बेवर्ली रो क्यों रही है, ठीक है? हुआ क्या जो रोना शुरू कर दी. तो खैर ये सारा कुछ एक ये इंसिडेंट है. एक और इंसिडेंट है, तो भाई लैरी स्क्वायर का कहना था कि जब इसको याद नहीं रहता तो ये आराम से घूम फिर कैसे रहा है, ठीक है? दूसरा इंसिडेंट है कि किचन के बारे में, कि अगर वो उठता है, बेकन और एग उसका फेवरेट है, बेकन और एग पकाता है, खाता है और फिर वापस सो जाता है. तो अगर वो उसका मेमोरी लॉस है तो ये काम वो कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा और कोई इंसिडेंट है बीबीए थर्ड यूजीन का, ये दोनों के अलावा और कोई इंसिडेंट है? खैर जो भी और भी इंसिडेंट है ये आप रीड आउट कर लीजिएगा. फिलहाल 2 इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है. तो इससे बेसिकली ये लैरी स्क्वायर ये रिसर्च कर रहे थे कि आखिर कैसे कर पा रहे हैं. किचन का चलो ठीक है आप ड्रॉ करके दिखाइए,
नहीं ड्रॉ कर पाया। रास्ता जो आप वापस आए घर, ड्रॉ करके बताइए, नहीं ड्रॉ कर पाया। ठीक है, अब जब वो घर पे ही रिसर्च कर रहे थे, सर्टेन क्वेश्चन वगैरह फिल कर रहे थे, तो यहाँ पे इस बीच यूजिन उठता है, वॉशरूम यूज करता है, वापस वो आकर के बैठ जाता है। अगेन लैरी स्क्वायर के दिमाग में क्वेश्चन मार्क, ये सब कर कैसे पाते हैं? तो फाइनली ये चीज देखा गया कि आपके दिमाग में एक पोर्शन होता है, प्रिमिटिव पोर्शन, जिसको बेसल गैंग्लिया के नाम से जानते हैं। ब्रेन का वो पोर्शन जो आपके डेली हैबिट को, कोई भी चीज अगर आप रेगुलरली करते हैं ना, वो चीज स्टोर हो जाती है। ठीक है, कोई भी काम अगर आप रेगुलरली करेंगे, जैसे कल ही डिस्कशन, कल मतलब परसों डिस्कशन हुआ था कि जो आप तैयार होते हैं या फिर मान लीजिए खाते हैं, पहले नहाना होता है या पहले ब्रश करें, या फिर पहले लेफ्ट शू टाई करें या राइट शू टाई करें, पहले शर्ट पहने या पहले टाई पहने, या ऐसा कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है हमारे दिमाग को। रीजन कि ये सारा डेली हैबिट का एक, हाँ, ये आदत बन चुका होता है, तो दिमाग उतना काम नहीं करता, दिमाग को इतना काम करना नहीं होता, करता नहीं है, करना नहीं होता। ये चीज प्रूव करने के लिए इसी चैप्टर में रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, कि हम लोग तो खैर इंसान है, जल्दी सीख जाते हैं, व्हाट अबाउट रैट? और अगर रैट सीख सकता है, रैट को यहाँ पे बताया गया कि सबसे बेवकूफ माना जाता है, दिमाग से उतना वो तेज नहीं होता। तो यहाँ पे ये प्रूव किया गया है कि ये अगर सीख सकता है तो कोई भी सीख सकता है। ये टी शेप टनल में यहाँ एक साइड देखिए चॉकलेट रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे रैट को छोड़ा गया, ये एक तरीके का पार्टीशन है जो क्लिक की आवाज से खुलता है। ठीक है, तो क्लिक की आवाज से जब फर्स्ट टाइम टनल में डाला गया, तो क्लिक की आवाज से जैसे आया, वो स्ट्रगल कर रहा है, स्क्रैच कर रहा है, दीवार वगैरह कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइमर है, उसको पता नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है। ठीक है, तो दिमाग का फ्रीक्वेंसी, इसका ये जो वेव है, ये है, यानी ये दिमाग इतना काम कर रहा है, दिमाग इतना सोच रहा है। और यही चीज जब कंटिन्यूअसली करवाया गया, यहाँ देखिए क्लिक का आवाज, जो पार्टीशन जैसे खुला, क्लिक का आवाज, फर्स्ट सेक्शन पूरा स्क्रैचिंग ऑफ वॉल, ठीक है, सूंघना, स्निफिंग एंड ऑल, ये सब हो रहा था। सेकंड सेक्शन में पहुंचा, फिर सेकंड सेक्शन मतलब अपोजिट साइड ऑफ जहां चॉकलेट रखा हुआ था, उधर मूव किया, वहां पे फिर अचानक से सूंघते सूंघते फिर वापस वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। एक दिन रखा गया, 2 दिन रखा गया, और ये चीज रिपीट किया गया, और एक दिन फाइनली ये देखा गया कि वो लगभग 21 डेज के अराउंड करने के बाद देखा गया कि अब उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, और अब इसका दिमाग का ये फ्रीक्वेंसी है, यानी अब दिमाग काम करना या दिमाग का यूटिलाइजेशन इस पोर्शन में कम हो गया। ठीक है, ये है इसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आराम से वो जैसे क्लिक का आवाज सुनता है, अंदर घुसता है, और फटाक से वो चॉकलेट के पास पहुंच के खा लेता है। ठीक है, तो इस सारे एक्सपेरिमेंट से और यूजिन के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया गया है कि हम लोग के ऊपर आए। जैसे मान लीजिए हम लोग बाइक चलाना सीखते हैं, याद करिए वो दिन जब हम लोग सीखे थे नए, कितना दिमाग काम कर रहा होता है। पहले हम लोग निकलते हैं, पहले मिरर एडजस्ट करते हैं, ठीक है, ब्रेक कब लगाना है, कितना दिमाग अलर्ट रहता है। और यही चीज अगर आप रिपीटेडली चलाते रहिए कुछ महीने, 6 महीने, 6 महीने में ऑलमोस्ट हैबिचुएटेड हो जाते हैं, तो कितना दिमाग काम करता है कि उतना अलर्ट रहता है कि आराम से गाना वाना सुनते भी आ जाएंगे। क्या पता कुछ और चीज सोचते सोचते आप घर पहुंच जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि हम घर पहुंचे। होता है ऐसा। तो यही चीज प्रूव किया जाता है कि जो भी काम आपको करना है, ठीक है, चाहे जो भी बनना हो, जो भी पढ़ना है, वो आप कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर फॉर्म में करिए। ठीक है, जो भी करना है, हम लोग मानते हैं ना कि सीए का कोर्स बहुत डिफिकल्ट है या बैंकिंग बहुत डिफिकल्ट है, राइट, ये सब जो भी चीज मानते हैं, जो आपका करियर का गोल है, अगर मान रहे हैं कि वो अचीव करना है, मैथ्स सॉल्व नहीं हो पाता है, क्योंकि मैथ्स का बहुत, बैंकिंग का बहुत तैयारी कर रही है, तो रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथ्स है ना, उसमें सेक्शन, मान लीजिए मैथ्स मेरा वीक पोर्शन है, तो मैथ या इंग्लिश मेरा वीक पोर्शन है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में ये सजेस्ट किया गया है कि वो आप कंसिस्टेंसी के साथ करिए। ठीक है, एक टाइम के बाद अगर कोई भी काम अगर आप रेगुलर करने लगेंगे, अभी जो प्रिमिटिव पोर्शन है आपका बेसल गैंग्लिया, वहां जाके स्टोर होना शुरू हो जाए। ठीक है, और वहां होकर स्टोर होना मतलब धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बन जाएगा, और चीज भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, जब यूजीन जैसा पर्सनालिटी जिसको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम था, वो डेली चीज याद रख पाता था, तो हम लोग तो भाई मेमोरी वगैरह ठीक ठाक है ना। तो यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, चैप्टर 1 के मेन यही प्रूव किया गया है कि हम लोग जो डेली चीज अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, तो एक टाइम के बाद आपको कोई भी चीज याद रखने में प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो दिमाग किसी और चीज को बेहतर काम करने में यूटिलाइज करना शुरू कर देता है। ठीक है, डेली वाले चीज में उतना वो एफर्ट नहीं लगाना। ये है चैप्टर 1, और चैप्टर 1 करेंगे कौन? BBA से
इंटरेस्टिंग है, पढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि ये जो सिर्फ मैंने जस्ट बताया पढ़ने में और भी इंटरेस्टिंग लगता है। फर्स्ट या चैप्टर का ग्रुप अपने मन से रेज योर हैंड, आई विल नॉट बी टेलिंग नेम। जब तक मैं अटेंडेंस ले रही हूँ सोच लीजिए। हाँ क्या हो गया? कर गई हुआ ना।